सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. हाय चंदन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम। ओके. सो चंदन, you are from the Kolkata. Okay. यस मैम। Tell us something about yourself. Ma'am, my name is my first of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Chandan Kumar Gupta, and I am from Kolkata, West Bengal. I am a qualified CMA and a BCom graduate in accounting and finance from Calcutta University. I have done my internship from a CA firm in Kolkata, where I learn about auditing, taxation, ROC compliance work. I have also assisted in the internal audit for the NGOs, prepared vendor reconciliation, and maintained accurate bookkeeping for using Tally and Excel. I have cleared my CMA level examination in my first attempt and securing multiple exemptions at both intermediate and final. Apart from my academics, my ability is to manage time and to communicate effectively, which helped me. Term goal is to secure a position in a reputed organization, and my long-term goal is to get a higher position in the same organization. That's all about me. Okay. Okay. Nice to know about you, Chandan. Tell me something about yourself, which is not mentioned in your CV. And apart from my CV, I would say that I am adaptable to any situation in work environment or the culture. Also, I would say that my hobbies is listening music or playing cricket, which helped me to work in a team. And apart from that, during my internship, I got appreciation from my principal as well as from my seniors for the work which I do over there. Okay. 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 So you have done your articleship with RADS and company. What RADS stands for? Ma'am, it's a partner's initials name, that is R for Ravindra, A for Ashish, and D for Deepak, and S for Saurabh. It's for partner's initials. That is that's and company. Okay, okay. So you have worked in the audits. What is the difference between statutory audit and tax audit? Ma'am, tax audit, when we do auditing of the taxation part, that is the income from the point income audit from the point of view of taxation. That is, there is different rules for the taxation, and there is different rules as per the Companies Act, which we do the statutory audit, because there is a depreciation difference as well as some incomes were not allowed in the taxation and is allowed in the Companies Act. So there's a difference between both. Okay. Anything else about the difference? And statutory audit is compulsory for every. If the business turnover would be more than 1 crore, it will compulsory for them. And if the receipt is up to 5%, their turnover limit will exceed to 10 crore. And for Okay. profession, it's more than 50 lakh. Okay. Uh, there is a compulsion for every company to get its annual accounts audited. Company audit is compulsory for every company, or is there an exemption? Ma'am, I believe that statutory audit that is compulsory for every company. Okay. And what about the company audit? Ma'am, company audit. Uh, uh, Pardon, ma'am. Company audit for statutory audit or internal audit. I'm not able to understand. Okay. So you have assisted in internal audits of NGOs. ठीक है. Yes, ma'am. What may be the constitution of the NGO? I'm sorry, ma'am. I'm not able to Okay. get it. Okay. So I just reframe my question. What may be the statutory structure of the NGOs? Like uh, it may company or a cooperative society. What it should be? Ma'am, NGOs can be trust or the society, and they can be formed in the form of Section 8 company. That is not for profit organization. Okay. In your point of view, what is the most beneficial constitutional structure, facility wise, compliance wise? What do Ma'am, you think? if we see, there is a difference between trust and Section 8, because the companies which is following Section 8, they have to follow the company's rule, that is Companies Act. But if the NGO is registered under trust or society, they have to follow their society act or trust.
But Okay. in trust or society, there is some that is some benefit for the NGOs. Okay. Suppose I'm coming to you and I'm asking you, I want to create an NGO. What constitution should I follow? I should be go for the Section 8 company or a cooperative society or a trust. What would be your suggestion to? Ma'am, my suggestion will be depend upon the NGOs that what are the capabilities of the NGOs, from where they are getting fund, and what are the financial strength of that NGO. If they have a good financials or they can comply with regulations of the company, then they should follow Section 8 company. You just mentioned the capability of the NGO regarding deciding the constitutional factor. What is the meaning of capability of NGO? And capability means that that NGO is able to maintain their financials accurately, because if we follow the Section 8, then they have to follow the certain rules and regulations. If they will not follow, they will have to pay the penalty as well. So if they have a strength that they can maintain everything, so they should go for Section 8. Okay. Okay. Uh, okay. What do you know about the post supply discount in GST law? And post-supply discount are the discount which the suppliers which it means that they have initially commenced that the discount will be happen when the uh, some quantity will be sold. For example, supplier and buyer firstly agree that 10% or 5% will be discount on the supply if they deliver the goods or something. How the post supply discounting account for in books of accounts? Because it is not known at the time of supply. Sorry, ma'am, I'm not able to recollect it. Okay. What is advance authorization scheme? Advance authorization. Sorry, ma'am. Okay, okay, okay. Okay, so suggest three internal controls for better working capital management. Internal. Ma'am, for better capital management, that the cost of capital should be minimum for the organization, and How this cost minimization of cost of capital support the better working capital management? ma'am, working capital. Sorry, ma'am, I'm not able to get the question. Okay, I'm asking suggest three internal controls for better working capital management in an organization. Ma'am, for better working capital, we should follow that the current asset should be lower. That is, uh, taking the cash from the debtor as soon as possible after selling the goods, and will pay the creditor after some time. That is, the time period will be delay for the creditor, so it will be benefit for the organization. And the other thing will be, sorry, I'm not able to get. Okay, okay. That's it from my side, Chandan. Ritika ma'am, please ask. Okay, first of all, why should we hire you over other candidates? Ma'am, as I have a good academic knowledge as well as professional knowledge I have, and I have also got a professional skills during my internship as well. And I am a hard worker, and I'm adaptable to any situation or the environment or the work culture. That and I have some skills that I can grow with the company and uh, contribute to the organization success. Okay, so tell me the difference between cost control and cost reduction. Ma'am, cost control is reducing the cost. That is for the short term. When we reduce the cost when it is for the temporary nature. That, for example, if our budget is for 100 rupees, and we try to when we try to reduce from the actual cost lower than the budgeted.
And the cost reduction is the permanent one. That is when we try to get the material without compromising the quality by reducing the cost. That is post post production. Which among these is a corrective measure and which among these is a preventive measure? Ma'am, cost control is the preventive measure and cost reduction is the corrective measure. Okay. Tell me the difference between internal audit and management audit. Ma'am, internal audit when we check the internal controls of the organization so that the fraud and error can be reduced, and management audit is the overall audit of the management of the organization, like employees are working, checking the efficiencies of the employer, or whether they are adaptable to over the work, or they are giving their best, that to reduce their it means generally to make the employee efficient. Okay. Matching concept. Do you understand anything by matching concept? Yes, ma'am. Matching concept means when we match the revenue and expenditure of a particular period. Materiality concept. Materiality is something which is big enough to impact the decision of the stakeholders. For example, if the company has turnover of 10 crore and we found something fraud of or the missing of entries of 5 lakh to 10 lakh, so it will be material. But if we found 5,000 rupees, 10,000 rupees, then it will not be material for that organization. Okay. The difference between ROI and RI. ROI, ma'am, ROI and RI. pardon, ma'am, full form for ROI and RI. That is ma'am, ROI, return on ma'am, investment, residual income. Return on ma'am, investment and residual income. ma'am, return on investment is the organization which generates the profit from investing the money, and residual income, I believe that, uh, sorry, ma'am, I'm not able to correct it. Okay, thank you. Okay. Good evening, Chandan. Good evening, ma'am. Since you have written about the ITRs, please tell me the difference between ITR 3 and 4. Ma'am, ITR 3 is used for the business income. As there's normal business income we show, and ITR is 4 is used for the presumptive taxation. When the supply business turnover is less than some limit, so they opt for the presumptive taxation so that they can pay less amount of tax. Okay. And what is the difference between stocks and shares? Ma'am, ma'am, shares is the company's smallest unit, of the capital, and stock is, I think, sorry, I'm not able to get it for this one. Okay. Do you prefer investing? Yes, ma'am. Little bit of my save from my savings side as well. Okay. So, why investing in physical gold is not preferred? It is not suggestible. Ma'am, because gold price is very much volatile in the market, so it's not preferred because sometimes it will be upward very much, and sometimes it will fall down. So it is volatile in nature. Then That's why when, should we invest in gold bonds? ma'am, in case of gold bonds, I believe that there is a fixed interest rate over there for in gold bonds. Okay. Um, Please tell me what is the penalty for non-filing of ITR as per due date under 139? And if that item is not filed within the due date, then the penalty is rupees 5,000. But if the income is less than 5 lakh, it's rupees 1,000. What else? Ma'am, and if we file after the year end, that is after 31st December, then I believe its penalty is rupees 10,000. And what about the interest for non-filing of ITR? Ma'am, interest is, ma'am, interest
Interest is under section 234A. Should I? Ma'am, in which What is it? section? Ma'am, it's 1%. Uh, it's it's 1% per month or part of the month. From From when ma'am, till when? ma'am, from for 234A, from the due date to till the payment. From the due date. That means from 31st of July or October or November. Yes, ma'am, for 234A. Okay. All right. So now since you are a cost and management accountant, how will you add to economy by getting that prefix, by getting that degree? Ma'am, in any organization, I will get into it. So I will try to analyze the organization that in which direction they are working. And as per the need of the organization or direction, I will work for the benefit of the organization so that the organization can let the company grow. Okay. But most of the works that you have mentioned in your CV can also be done by a chartered accountant. Yes, Then ma'am. why should a company hire a cost accountant? What difference will you make toward for the organization? Ma'am, I believe that uh, chartered accountant or cost accountant mainly focus in the finance area. That is nothing is that is both are the most similar area they are focusing. Well, in subject wise as also in practical uh, scenario. But as a cost accountant, we tends to develop the work of the management as well. We have learned the costing as well as the management skills that the chartered accountants doesn't have there in their syllabus. Okay. All right. What is the difference between EPS and diluted EPS? Ma'am, EPS is the earning per share when the company divide their earnings with the total number of equity share. But if we talk about the diluted EPS, it considers the equity share which will be converted in future. Okay. And what is STT? And STT is a security transaction tax which we pay at the time of the exchange of the at the time of transaction with the shares. Are you aware that government has increased STT? No, ma'am, I'm not aware. Okay. So are you aware about the changes under capital gain head in the Yes, recent ma'am. budget? Yes, ma'am. What, according to you, is the motive of government behind those changes? Ma'am, if I talk about the short-term capital gain, so government changes the rate from 15% to 20%, as the government main focus to get the more taxes from the persons who are who are earning more profit over short term, and for the long term, as government has reduced the rate that is 12.5%. They increased the rate from 10% to 12.5%, but they have increased the limit from 1 lakh to 1,25,000 as their ceiling limit. And generally they have given two options for the other than securities, that is 12.5% if the SEC can choose, and the other is 20% for if they want to get a indexation benefit. So government main motive is to for the other than stock, that is to reduce the tax burden on the common public for the capital gain, and the other is to generate more revenue from the shares. Okay, more revenue. But don't you think so that Mhm. this will lead to a downfall in the investing Ma'am, but as per on the investors' other point of view? Ma'am, but on the other hand, government has also increased the limit for their basic limit for their exemption. Government That has is, removed indexation benefit as well. ma'am, but government also restored the benefit for the indexation. That is, they have a two option that if they can go for the indexation as well as they can But opt that for is the only for 12.5. land and building, right? Yes, ma'am. Or is And it for for this, every asset? no, ma'am, that is for the, I believe that is for the every capital asset other than share. Okay, all right. My last question from you is, what are options?
Ma'am, options are the future contracts which the person have to generally to minimize their risk. Options are the future contracts. Then what are future derivatives? Sorry, ma'am. Sorry, I'm not able to recollect it. Okay, thank you, Chandan. So, Chandan, it's a feedback time. और चंदन, एक तो ये सीवी का फॉर्मेट आपने कहीं से कॉपी किया है? नो मैम, एक सीनियर्स ने दिया था। थोड़ा सा है ना, बिखरा बिखरा सा फॉर्मेट है। लाइक इस थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस को आप टेबुलर फॉर्म में दिखाते तो थोड़ा सा सही दिखता। आपने अपने पापा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है, अपना एक मैरिटल स्टेटस उसमें और डालिए, दैट यू आर अनमैरिड। ठीक। और यहाँ पर आप देखो, मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है। टैक्स ऑडिट इज काइंड ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड कंपनी ऑडिट इज डजंट कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है? जो स्टैच्यू से कराई जाए, जो किसी कानून के तहत कराई जाए। सो एवरी ऑडिट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, वेदर इट इज अ कंपनी ऑडिट और अ टैक्स ऑडिट। So tax, company audit and statutory audit are not synonyms. वो एक दूसरे की जगह यूज नहीं होते। टैक्स ऑडिट इज अ काइंड ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है? हाँ। कौन सी स्टैट्यूटरी ऑडिट? कंपनी ऑडिट। टैक्स ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बट कंपनी को कौन सी स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है? केवल कंपनी ऑडिट। अगर आप ये बोलोगे हाँ स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है, इसका मतलब हर कंपनी को हर तरीके की स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है, पर टैक्स ऑडिट तो नहीं कराना होता। क्राइटेरिया है ना टैक्स ऑडिट के लिए। तो ठीक। इसके बाद हमने बात की कि एनजीओ वाली बात। ठीक है, उस एनजीओ वाली बात पे अननेसेसरी आए और वांटेड टू ट्रैप यू, बिकॉज आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी एनजीओ वाली बात बोली। तो एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट कोई भी फॉर्म हो सकता है। एनजीओ की कैपेबिलिटी कुछ नहीं होती है। एनजीओ की क्या कैपेबिलिटी है? ठीक है, एनजीओ को तो किसी से फंडिंग लेनी है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में पैसा खर्च करना है, तो किसी भी फॉर्मेट में बनाई जा सकती है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्मेट ही क्यों आया था? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट के फॉर्मेट में क्लैरिटी ही नहीं है, इसीलिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। तो अगर कोई आपके पास भी आएगा तो आज की डेट में यही सजेस्ट करते हैं कंसल्टेंट कि आप सेक्शन 8 कंपनी बनवा लो। राइट। ठीक है। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली बात की पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। बहुत कॉमन है जीएसटी लॉ में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, और हर कंपनी जो है, जैसे बीपीसीएल वाली जो कंपनी है, वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देती ही होगी। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को एक बार वापस गो थ्रू कीजिए। अकाउंट फॉर कैसे करते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को? क्रेडिट नोट इशू करके आईटीसी रिसिपिएंट रिवर्स करता है। एडवांस ऑथराइजेशन, इट्स अगेन वेरी कॉमन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम जो इंडस्ट्रीज लेती है ड्यूटी फ्री इनपुट्स को इंपोर्ट करने के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा रीड करिए। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए आप अपने क्रेडिट साइकिल को बढ़ा सकते हैं, डेटा साइकिल को आप कम कर सकते हैं, ईओक्यू वाला कंसेप्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल बेटर करेंगे ना, तो ये एक थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन, आपने अपने सीवी में लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग। आपने ये कॉपी पेस्ट तो कर लिया क्रिटिकल थिंकिंग, बट व्हेन आई आस्क्ड यू नाउ दिस इज द कंसर्न हाउ यू कैन बेटर योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज द प्लेस वेयर यू नीड योर क्रिटिकल थिंकिंग, बट वो क्रिटिकल थिंकिंग मुझे दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि ये फॉर्मेट कॉपी पेस्टेड है कहीं पे। राइट। और पैनल भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में अपन फोकस करेंगे। और क्यों आपको रितिका अलग तरीके से फीडबैक देगी इस बारे में, पर मैं भी बात करना चाहती हूँ। आपने बोला कि क्यों आपको कोई, इन्होंने पूछा क्यों आपको कोई कंपनी हायर करे, तो आपने अब आपने बोला आई हैव अ गुड एकेडमिक नॉलेज, लेकिन आप सोचे जस्ट उसके पहले मैं आपसे बैक टू बैक एकेडमिक्स पे क्वेश्चन पूछ रही थी और आंसर सही
नहीं आ रहा था, तो अगेन इट लुक्स मी सरप्राइजिंग कि आप एकेडमिक्स पे आंसर गलत दे रहे हैं, स्टिल यू आर क्लेमिंग दैट आई हैव अ गुड एकेडमिक नॉलेज। और एकेडमिक नॉलेज की बात मत करिए ना, आप क्वालिफाइड हैं तो मानते हैं हम आपके पास एकेडमिक नॉलेज है तभी तो आप सीएमए पास करके आए हो। हर बंदे के पास आपके बराबर एकेडमिक नॉलेज होगी, सब क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और रैंक होल्डर्स होंगे और फर्स्ट टाइम पास आउट्स होंगे आपकी तरह। इस एकेडमिक नॉलेज के अलावा क्या है, ये तो सबके पास है। व्हाट सेट्स अपार्ट यू डिफरेंट? सो आपके पास, आपने स्किल्स के बारे में, मेरे पास स्किल्स है, कौन सी स्किल्स है, बी स्पेसिफिक, आपके पास कौन सी स्किल है? हार्ड वर्कर शब्द नहीं यूज करते, हम मजदूर नहीं है, हमें थोड़ी हार्ड वर्कर होना है, हम लेबर थोड़ी है जो वहां जाके हम हार्ड वर्कर होना ही नहीं है, हमें कंपनी को हार्ड वर्कर नहीं चाहिए, कंपनी को स्मार्ट वर्कर चाहिए। आप बोले मैं अडेप्टेबिलिटी है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी, मैं मेरे में फ्लेक्सिबल है, आई एम पॉजिटिव टुवर्ड्स दी पीपल अराउंड मी, ऐसा आप और भी कुछ बोल सकते हैं। थोड़ा सा इन चीजों पे हम फोकस करेंगे चंदन, ठीक है? सो सो दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, डोंट टेक इट ऑन अ नेगेटिव साइड, क्योंकि आज हम स्टेज पे खड़े हैं कि हमें रियलिटी चेक लेना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में हमें इंटरव्यू देने जाना है, राइट? Yes, ठीक है, ओके। बाकी आपकी कोशिश अच्छी थी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप अटेंटिव दिखते हैं इंटरव्यू में, बट अगर अगर सवालों के जवाब सही हो जाएंगे तो इट वुड बी चेरी ऑन द केक, राइट रितिका? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर अपीयरेंस और प्रेजेंस। आई मस्ट से कि जिस स्माइल के साथ आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया उससे एक पॉजिटिविटी आती है कि इंटरव्यू लेने वाले में भी कि ठीक है, देने वाले को सच में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे, जो भी डोमेन साइड से या टेक्निकल क्वेश्चंस थे, उनमें कुछ खास फर्क नहीं था, लेकिन हाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, वो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स कन्वेंशन कॉन्सेप्ट से पूछा था, जिसका जवाब शायद आपने ऑडिट पर्सपेक्टिव से दिया। और बाकी जो चूजिंग यू ओवर अदर कैंडिडेट्स वाला क्वेश्चन था, उसका मैम ने जो बोला वही सेम चीज, क्योंकि जैसे ही आपने एकेडमिक बोला तो मेरे एक्सप्रेशन यही थे कि अभी तो आपके सारे आंसर जो थे जा रहे थे, वो कैसे जा रहे थे, तो आपने स्टार्ट ही ऐसे किया था, बस वो एक ही कर रही थी। बाकी अच्छा कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ओके, तो चंदन ITR 3 और 4 करेक्ट था, बट आपको स्टॉक्स और शेयर्स का डिफरेंस नहीं पता। बहुत बेसिक डिफरेंस है ना स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में। स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म, और उसी स्टॉक में से, स्टॉक इज ओनरशिप, वो ओनरशिप का कुछ हिस्सा इज शेयर्स। ठीक है, क्योंकि आपने फाइनेंस पढ़ी है, तो ये दोनों तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स। देन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड्स में क्यों करना चाहिए? बिकॉज इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट था। उसके अलावा ITR फाइलिंग की ड्यू डेट जो पेनल्टी थी, दैट वाज करेक्ट। ओके, इकोनॉमी में ऐड आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था, दैट हाउ विल यू ऐड टू इकोनॉमी बाय बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एंड व्हाई कंपनी शुड प्रेफर यू ओवर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज you have done the same works as that of chartered accountant, so why the company should prefer a cost accountant? तो उसका आपका basic focus should be on cost, because किसी भी कंपनी के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट मैनेज होगी तो उसी से डायरेक्टली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फोकस ऑन द कॉस्ट मैनेजमेंट थिंग, बिकॉज वही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर है, कि आप कॉस्ट मैनेजमेंट के तरीके आपको ज्यादा बेटर आएंगे। ओके, अच्छा, यस। ओके। और एक बात, आपने ना अपने वर्क एक्सपीरियंस में एनजीओ के केस में लिखा है आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या डिस्क्रिपेंसी आपने पर्टिकुलर आइडेंटिफाई की थी, उसे कैसे रिजॉल्व किया? तो थोड़ा सा एक आंसर मैप कर लें अपने दिमाग में हाँ, एनजीओ के वर्क के दौरान। और आपने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आपने रिकंसिलिएशन टाइम को 20% से रिड्यूस किया, ठीक है? इट्स अ गुड नंबर, 20% से रिड्यूस किया, तो इसके बारे में आपसे डिटेल में बात पूछी जा सकती है। तो आपको क्या आपने काम किया है, कैसे आपने असेस किया कि आपने 20% टाइम रिड्यूस किया, पहले क्या होता था, आपके काम करने के बाद क्या हुआ? थोड़ा सा ये आप ओवरऑल ध्यान रखें, अपने सीवी के फॉर्मेट को थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि सीवी वही होगा जो आप हाथ में लेके प्रिंट आउट लेके जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए हेल्प के लिए तो वी विल फॉरवर्ड अ सीवी फॉर्मेट टू यू, आप उसके जैसा बना लें, राइट? और आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आप पूछिए, मीनवाइल नेक्स्ट कैंडिडेट ज्वाइन करेगा। और भी तो वैसे कुछ नहीं आ रहा है।
सब हाँ अच्छा जी, होगा। आप टेक्निकल अपना अपडेट कीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। यू आर डूइंग गुड, कोई कोई इशू नहीं, ठीक है। और हम वेट करेंगे आपका कि आप हमें मैसेज करेंगे कि 7th का क्या है, वो रिजल्ट क्या रहा है। आई विश कि आप बोले कि बीपीसीएल हो गया है या ट्राइडेंट हो गया है। थैंक यू मैम। ठीक है। और इन अगले 2 दिनों में अगर आपको कोई और हमसे हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर क्लासेस के बीच में नहीं आया मैसेज तो वी कॉल बैक और आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।